Okay, in slicing, slicing means cutting something into pieces. Okay, trying to take out a few elements from a list is called as slicing. Okay, so how do we slice a list? In order to slice a list, we are going to use this particular range out here. What is this range? This is going to tell you the start, and this is going to tell you where to stop. Okay, so this one is to start, and this one will tell you where to stop. Okay, start is always inclusive and stop number is always excluded. Okay, मतलब 6 है तो 6 से just पहले आप रुक जाओगे, 5 पे आप रुक जाओगे. Okay, 6 is not included whereas 2 is always included. तो हमेशा आपका लिस्ट का जो रेंज होता है उसमें 3 चीजें होती हैं. There are 3 things out here. Okay, number 1 is start. Okay, number 2 is stop, which is excluded, and number 3 is step. Okay, the third one is step. Okay, so you have to remember it as start, stop, and step. Start is always included. The element or the number in start is always included. Stop is the index before which you have to stop, and step tells you how many indexes you have to jump. Okay, so now let us see the start and stop. Say suppose list 1, red, green, blue, cyan, magenta, yellow, black. Subject from indices 2 to 5 of list 1. If you want 2 to 5, okay, that is how do you give it. Okay, if you want number 2 to number 5, okay, you have to give in the range, you have to give in start, you have to give 2, and in stop you have to give 6, that is n plus 1. Okay, n plus 1 has to be there in stop. If you give n plus 1, then it will stop at n. Okay, जितने पे आपको स्टॉप करना उससे एक नंबर ज्यादा, उससे एक इंडेक्स नंबर ज्यादा आप डालोगे, क्योंकि हमेशा लास्ट नंबर जो है या स्टॉप नंबर जो है वो नंबर हमेशा एक्सक्लूड हो जाता है. ओके, सो इफ यू वांट ब्लू, cyan, magenta and yellow to be printed, you will give this is index number 0, this is index number 1. Okay, this is index number 2, this is index number 3, this is index number 4, this is index number 5 and this is index number 6. तो 6 से just पहले रुकना है. So start is 2, क्योंकि आपको blue चाहिए, 2 का उसका index number है 2. So start is 2 and stop just before black, that is just before index number 6. Okay, so when you give list 2 is to 6, then it will be giving you as blue, cyan, magenta and yellow as the output. Okay, this is called as the truncated list. Truncated means anything that has been cut. Okay, जिसको हमने स्लाइस कर दिया है, जिसको हमने कट आउट कर दिया है, उसको बोला जाता है ट्रंकेटेड. ओके, सिमिलरली अगर लिस्ट 2 is to 20 में दूं, ओके, नाउ से इंडेक्स नंबर 20 में क्या है, इज यहाँ पे तो इंडेक्स नंबर 6 तक ही है. इज देयर एनीथिंग इन इंडेक्स नंबर 20? सो दैट मीन्स 20 से जस्ट पहले. ओके, तो जहाँ पे आइटम है, एलिमेंट है, वहां तक वो प्रिंट कर देगा. दैट मीन्स 6 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, नंबर 2 इंडेक्स मतलब ब्लू से स्टार्ट करेगा और 20 से पहले, 20 से पहले में क्या होगा, ओके, दैट इज आउट ऑफ रेंज. ठीक है, 20 इज टोटली आउट ऑफ रेंज, तो वो एकदम लिस्ट का लास्ट वाला नंबर जो है, इंडेक्स जो है, वहां तक उसको प्रिंट कर देगा. सो ब्लैक इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ओके, दिस नंबर, द एंडिंग नंबर इज आउट ऑफ रेंज. ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट 1, 7 is to 2. ठीक है, अब देखो 7 से लेकर 2 तक कैसे प्रिंट करोगे. हमेशा लेफ्ट टू राइट वो प्रिंट करता है, राइट टू लेफ्ट प्रिंट नहीं करता. राइट टू लेफ्ट इट कैन ट्रैवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट प्रिंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, इट कैन ट्रैवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट प्रिंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो व्हाट इज लिस्ट 1, 7 is to 2? यहाँ पे इंडेक्स नंबर 7 फर्स्ट ऑफ ऑल तो है नहीं. ठीक है, वहां से लेकर 2 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट टू लेफ्ट वो बिल्कुल
प्रिंट नहीं कर सकता. ओके, सो इट इज गोइंग टू गिव यू एन एम्प्टी लिस्ट. अब इसे कुछ समझ नहीं आया. ओके, द फर्स्ट इंडेक्स should is greater than second index, so it will not accept it. Always the first index should be smaller than second index. Okay, जैसे कि यहाँ पे देखो, फर्स्ट इंडेक्स इज स्मॉलर दैन सेकेंड इंडेक्स. सेकेंड इंडेक्स आउट ऑफ रेंज होने के बावजूद वो हमें आउटपुट दे रहा है. इट इज गिविंग अस एन आउटपुट इवन इफ द सेकेंड इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज. ओके, व्हाई? बिकॉज द सेकेंड इंडेक्स इज bigger than this first index. Over here also you can see the first index is smaller than second index. The second index is bigger than the first index. Okay. Next, returning a sublist 0 to 4. Okay. Now here the first index is missing. Okay. So when the first index is missing, it will by default take it as 0. Okay. It will by default take it as 0. Okay, so from 0 to just before 5 it is going to print. Okay, so red, green, blue, cyan and magenta. Okay, next, slicing with a given step size. Okay, now you have started with the start index, then you have given the stop index, and you have given one more index over here, that is step. Okay, this is your step. So what it is going to do, अब 0th प्लेस पे कौन है? 0th प्लेस पे आपका रेड है. ओके, फर्स्ट प्लेस पे कौन है? फर्स्ट प्लेस पे है ग्रीन. ओके, क्लियर? इन द फर्स्ट प्लेस you have green. What is there in the second place? In the second place you have blue. What is there in the third place? You have cyan. What is there in the fourth place? Okay, it is magenta. What is there in the fifth place? And what is there in the sixth place? Okay, let's go up and just see it. In the fifth place you have yellow, and in the sixth place you have black. Okay, so here you have yellow and here you have black. Okay, for black I am going to give it as B and small l. Okay, done. Now it is saying 0 to less than 6. That means it is going to start with red and 6 से just पहले उसे रुक जाना है. It has to stop at 5. Okay, last printing object will be 5. Okay, it is saying that you have to give a step of 2. Okay, that means पहले 0 को print कर देगा. Okay, that is red, फिर 1 and then 2. Step 2. Okay, तो फिर 2 में कौन है अभी? Now it is blue. Okay, फिर उसके बाद 1 and then 2. Okay, अब इसमें कौन है? इसमें है magenta. Okay, और उसके बाद 1, लेकिन उसके बाद और नहीं जा सकता क्योंकि हमें बस यहीं पे रुक जाना है. This was our last place where we had to stop. Okay, so even if it can go to 6, क्योंकि यहाँ पे 6 है लेकिन 6 is excluded. 6 से पहले ही उसे रुक जाना है तो 5 पे ही वो रुक जाएगा और 1 2 करके सेकेंड वाले को वो प्रिंट नहीं करने वाला. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू चूज. एवरी सेकेंड एलिमेंट इज प्रिंटेड. एवरी सेकेंड एलिमेंट. 0 प्रिंट हो गया. ओके, हमेशा 0, फर्स्ट वाला 0 है तो पहले 0 प्रिंट हो गया, देन फर्स्ट एंड देन सेकेंड एलिमेंट, then first and then second element, and then first, and फिर it's done, it's over. Okay, now traversing the list with negative indexes. Negative index कैसे होते हैं? अभी यही blue जो है, okay, if I take another color, okay, now the same blue over here it is -1. Okay, this is -1. Here the index is -2, here the index is -3, here the index is -4, here the index is -5, here the index is -6, and here the index is -7. Okay, this is how it is going now. Now when we are traversing from right to left, okay, we can traverse from right to left, but we are going to print from left to right. Please remember this. Okay, traversing का मतलब है taking a journey. Okay, moving. Okay,
सो वी कैन मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन प्रिंट जब करेंगे तो वो लेफ्ट टू राइट ही प्रिंट होगा. ओके, सो नाउ राइट टू लेफ्ट -6 में कौन है? -6 में है हमारा ग्रीन. ओके, सो दिस इज -6 इज इंक्लूडेड -2 से जस्ट पहले. ओके, सो कौन सा है -2 से जस्ट पहले? -3 है यहाँ पे, सो इट इज मैजेंटा. ओके, सो अब ग्रीन से लेकर मैजेंटा वो प्रिंट करेगा. क्या है? ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा. नाउ सी, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा. प्लीज रिमेंबर, क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहे हो, प्लीज मैजेंटा, सियान, ब्लू, ग्रीन मत लिख देना. राइट टू लेफ्ट वो सिर्फ ट्रैवर्स कर सकता है, लेकिन प्रिंटिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट ही करेगा. राइट टू लेफ्ट प्रिंट नहीं करता. ओके, सो व्हाइल प्रिंटिंग इट इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू right. Okay, next, both first and last index are missing. Okay, that means the first index is also not here. Okay, यहाँ पे first index में भी कुछ नहीं है. यहाँ पे second index मतलब stop कहाँ पे करना है वो भी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ step बताया गया है. Only step is there. Okay, so the step size 2 on entire list. Okay, so it is just going to put the step size 2 on the entire list. ठीक है, अब पूरे लिस्ट में अगर वो स्टेप साइज 2 डाल रहा है तो क्या होगा? ओके, दिस इज फर्स्ट 0th वाला प्रिंट हो जाएगा, सो रेड प्रिंट हो गया, फिर 1 एंड देन 2, सेकेंड एलिमेंट इज बीइंग प्रिंटेड, मतलब ब्लू प्रिंट हो जाएगा. ओके, फिर 1 एंड 2. ओके, फिर से द सेकेंड एलिमेंट इज बीइंग प्रिंटेड, मतलब मैजेंटा प्रिंट हो जाएगा. फिर से 1 एंड 2, मतलब this blue is going to be printed, sorry, black is going to be printed, so black print हो जाएगा. Okay, because no start and no end is defined, so it is going to start from 0 and it is going to take the last element into consideration. Okay, now the same thing, if I give like no first element, no last element. Okay, but I give the traversing to be done in as -1, step is -1. Okay, so वो traverse -1 से करेगा. Okay, -1 पे आ गया, पहले -1 प्रिंट हो जाएगा black, and then yellow, and then magenta. This is the only place where राइट टू लेफ्ट वो ट्रैवर्स ही नहीं, राइट टू लेफ्ट वो प्रिंट भी कर रहा है, क्योंकि -1 धीरे धीरे एक नीचे होते हुए उसे प्रिंट कर रहा है. Okay, so whenever in your exam, if it is asked you, a list is given and it is said that you have to print the list in the reverse order, the entire list in the reverse order, then what are you going to give? Write the list name, okay, and then give square brackets. Don't write anything in start, give a colon. Don't write anything in stop, give a colon, and in the step write -1. तो automatically वो reverse order में उस list को, पूरे list को वो print कर देगा. Okay, now traversing a list through loops. Okay, we have read these loops also and we have seen how traversing can be done in loops. I'm repeating it. Okay, say suppose there is again a list where we have red, green, blue, yellow, black. Okay, and for item in list 1, print item. Okay, so for every item in list 1 you have to print the item. So for item in list 1 में पहले आएगा red, so it is going to print red. उसके बाद नेक्स्ट में जाएगा ग्रीन के पास, सो इट इज गोइंग टू प्रिंट ग्रीन. उसके बाद नेक्स्ट में जाएगा ब्लू के पास, सो नेक्स्ट में प्रिंट होगा ब्लू. उसके बाद जाता है येलो के पास, तो नेक्स्ट प्रिंट होता है येलो. उसके बाद जाता है ब्लैक के पास और नेक्स्ट प्रिंट होता है ब्लैक. सो व्हाइल प्रिंटिंग यू हैव टू बी केयरफुल कि एक के नीचे एक सारे आ रहे हैं. ओके, बिकॉज दिस इज अ फॉर स्टेटमेंट, सो एक के नीचे एक सारे आ रहे हैं. ओके, any doubt still here? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so now even we can give the range function in for loop, and we can also use the length. Say suppose we do not know the length of the list. Okay, लेकिन पूरे length of the list को हमें traverse करना है. Okay, so what are we going to do? हम उसे इस तरीके से बता देंगे, for I in range length
of the list. मतलब उसका range क्या है? Its range is length of the list, because here we do not know the length of the list. Maybe it is quite long, or maybe the user has not provided it to us. Okay, then we say print list 1, all the items in I. Okay, every item in I. Now here we knew the list, here we don't know the list. Here we know the list, that's why we know the range also. Okay, so by default, whatever is there in the list, those all items are being traversed over here. But here we do not know what is there in the list, hence we do not know what is the length of the list. So we are just saying for I in the range length of the list, print list 1 I. Okay, so now it is going to go through list 1, which has been given by the programmer, and it is going to print all the elements in the particular list. Okay, clear? Now there is an important note here. The length list 1 returns the length or total number of elements of list 1. Okay, list 1 में जितने elements हैं सारे elements count होते हैं length में. Okay, length में ऐसा feature नहीं है कि if the length is 12 मतलब number of elements are 12, then length is not going to take 12 minus 1, उससे just पहले रुक जाना, ऐसी बातें नहीं होती हैं length में. Length is also going to give you the same output, that is 12. अगर 12 elements हैं तो वो length आपको बता देगा that there are overall 12 elements. Whereas range function, okay, अगर range में हम लोगों ने n दिया होता and n is 12, ठीक है, तो वो 12 से just पहले रुक जाएगा, n-1 पे रुक जाएगा. Okay, that means stop हमेशा क्या होता है? It's excluded. Stop is always -1. Okay, the last number is always -1. ओके, तो अगर आप चाहते हो कि पूरा आपका प्रिंट होना चाहिए, ओके, से सपोज इफ आई हैड पुट दिस लेंथ लिस्ट 1 इनटू वन वेरिएबल n. ओके, अगर मैं यहाँ पे दे देती n इज इक्वल टू और फिर मैं दे देती लेंथ लिस्ट 1, ठीक है, यहाँ पे जो है उसे मैं यहाँ पे डाल देती, फिर मैं यहाँ पे रेंज n लिखती. ओके, इफ आई वुड हैव गिवन रेंज n, तो वो क्या करेगा? n-1 पे रुक जाएगा. ओके, तो ये लास्ट वाला ब्लैक जो है वो प्रिंट नहीं होता. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या देना है? n+1 आपको देना है, so that it will stop at nth element. That means the last element, that is black. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So we have already seen this length a number of times. Okay, length argument, what it does, length when it is passed, okay, this returns the entire length of the list. जितने elements है उतना ही number आपको बताएगा कि भाई इसमें 5 elements हैं. Okay, next list function, what it is going to do, this is going to create an empty list if there is no argument. Say suppose list 1 is equal to, और आपके पास कोई arguments नहीं है, you don't know what is going to be there in the list, then you just give list and parenthesis, then it is going to print list 1. Okay, and if you try to print list 1, then it will give you an empty bracket. Okay, an empty list. Similarly, if some argument is passed later on, okay, it creates a list if sequence is passed as an argument. Okay, now see here, string 1 is equal to a, e, I, o, u. Okay, this is just a string, a single string, and then I say list 1 is equal to list str1. तो अब उसने क्या कर दिया? a को अलग से एक आइटम बना दिया लिस्ट का, e को अलग से एक आइटम बना दिया, I को अलग से एक आइटम बना दिया, O को अलग से एक आइटम बना दिया, and U को अलग से उसने एक आइटम बना दिया. Now A has been assigned index 0, E 1, I 2, O 3 and U 4. लेकिन normal string में ये क्या हो रहा था? This entire thing was one memory space only. That means this entire thing was occupying one index only. ये पूरा एक माना जा रहा था. अब उसको हमने list function में जैसे ही डाल दिया, immediately it splitted out every element as a separate item. Okay, so in your exam, if it is asked, if it is told to you that
there is a string of characters. Okay, if we want every character to be separated out as a list, into a list, then how are we going to do it? Which built-in function will you be using? Then it is the list function which you will be using. Then is append का मतलब है join कर देना. Okay, done. Append बोलो, concatenate बोलो, join बोलो. Okay, all of these mean the same. Append a single element passed as an argument at the end of the list. Okay, so what it can append only a single element. जैसे कि 10 20 30 40 is the list. If I say list 1 dot append 50, तो उस 50 को वो इस 40 के बाद append करेगा, join करेगा. Okay, but single element को वो join कर रहा है. Okay, similarly it can be used to append, okay, another list. Okay, say suppose list 1 is equal to 20 20 30 40. अब list 1 के साथ हम एक और list को append करें. Now you can see this is another list, क्योंकि देखो यहाँ पे square brackets हैं और हमने उसे append function में डाला हुआ है. Okay, so what it is going to do, it is going to take this entire list after this 40. ठीक है, 50 60 को एक साथ को यहाँ पे डाल देगा. So now say 10 20 30 40, लेकिन देखो 50 60 अलग से फिर से square brackets में है. So it is showing that this was another list which has been appended with this list. Okay, extend. Now what is extend going to do? Extend append दोनों एक ही तरह से मतलब काम कर रहे हैं. बस इतना है, it appends each element of the list passed as an argument at the end of the given list. अब देखो list 1 is 10 20 30, list 2 is 40 50. If I say list 1 dot extend list 2 and if I say print list 1, अब देखो इसमें क्या हो रहा था, 10 20 30 40, उसके बाद 50 60 दोनों आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अलग से फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिख रहे हैं. यहाँ पे उसने 40 50 को देखो अलग से स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं डाला, कॉमा कॉमा, लाइक इट इज लुकिंग लाइक वन सिंगल लिस्ट. द सेम लिस्ट इज बीइंग एक्सटेंडेड. ओके, बट whereas appending is joining, okay, तो इसमें पता चल जाएगा कि ये लिस्ट के साथ इस लिस्ट को ज्वाइन किया है. ओके, सो इन योर एग्जाम whenever there are find the output or write the output type of questions and append and extend use होते हैं, then you have to be very careful. You have to remember that append includes square brackets of the other list, whereas extend removes the square bracket of the other list. Okay, you can remember it in this way. Like say suppose you have a house. Okay, you're trying to extend your house. Okay, so when you're trying to extend, you join the floor of the house along with the extended portion, and maybe आपको bedroom extend करना है या balcony extend करना है, तो आप इसको तोड़ के उसके साथ आप पूरा join करा के as a whole you extend it. लेकिन अगर आप append की बात करते हो, मान के चलो आपका फर्स्ट फ्लोर में एक घर है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में दूसरा वाला घर भी आप अगर बाय कर रहे हो, ओके, इफ यू आर बाइंग दैट आल्सो, ओके, सो you say that these two houses are ours. At max you will give one passage, common passage between these two houses, but you're not going to join the entire rooms. ओके, सारे रूम्स को तोड़ मरोड़ के एक साथ आप बनाते नहीं हो. यू जस्ट गिव अ पैसेज, कॉमन पैसेज बिटवीन दिस हाउस एंड दैट हाउस. दैट इज कॉल्ड एज अपेंड. ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि ये घर अलग है, इसका भी एंट्रेंस डोर है, उसका भी एंट्रेंस डोर है. ओके, लेकिन दोनों घरों के बीच में एक पैसेज है. और मे बी यू हैव वन हाउस इन द फर्स्ट फ्लोर एंड द सेकेंड हाउस इन द टॉप अपर फ्लोर. ओके, तो आप लोग क्या कर दोगे, दोनों घरों के बीच में से एक सीढ़ी अंदर से डाल दोगे, तो पता चल जाएगा कि वो अलग एक घर है, ये अलग एक घर है. यहाँ से वहां जाने के लिए रास्ता एक बना हुआ, दैट इज स्टेयर्स. ओके, घर के अंदर से भी आप स्टेयर्स बना दोगे एंड इट विल लुक लाइक डुप्लेक्स. ओके, whereas extension means it will look like one whole thing. Okay, the feeling of two different things combined or joined will be gone. Okay, it will look like one whole thing. Okay, so no square brackets over there.
नेक्स्ट इज इंसर्ट. इफ वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट, ओके, अब इंसर्ट में आप बता सकते हो कि कहाँ पे पर्टिकुलरली आपको इंसर्ट करना है, लाइक इन अपेंड, एक्सटेंड, ओके. In these cases it is always appending or extending after the first list is finishing. ओके, दोनों ही केस में आफ्टर दिस इज फिनिशिंग, उसके बाद ही वो अपेंड या एक्सटेंड कर रहा है. लेकिन अगर मान के चलो इस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे मुझे एक एक्स्ट्रा आइटम ऐड करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन योर क्लास there is another student who has joined in between, okay, that person's name starts with B, okay, then what will happen, alphabetical order में आपने क्या करा है, उसको बीच में आपने इंसर्ट किया है. फिर आप सबके रोल नंबर्स क्या है, पीछे वाले के सबके रोल नंबर्स +1 होते जाएंगे. दैट मीन्स सपोज योर रोल नंबर इज 12, योर रोल नंबर विल बिकम 13, 13 रोल नंबर विल बिकम 14, 14 रोल नंबर विल बिकम 15, क्योंकि 12 वाले रोल नंबर की जगह पे इसका नाम फिट हो रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. सो दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज गेटिंग दैट रोल नंबर 12. Okay, the same thing happens over here in insert. What is happening, say suppose there is a list 10, 20, 30, 40, 50 and I'm asked to insert element 25 at the index value 2. Okay, so this is index value 0, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. ठीक है, अब मुझे इस 2 के इंडेक्स वैल्यू पे कुछ इंसर्ट करना है. 2 के जगह पे ऑलरेडी कौन है, 30 है. ठीक है, so if how will I insert, first of all to insert I'll give first the index value and then the data. Okay, first I'll tell where and then I'll tell what. Okay, where to go and then what to insert. Remember it in this way, where to go and then what to insert. Okay, so index number 2 पे 25 data insert होगा. Okay, so what it is happening now, see this is index number 0 वैसे ही रहा, index number 1 वैसे ही रहा, index number 2 पे अब कौन आ गया, 25. अब index number 3 पे कौन आ गया है, 30. index number 4 पे कौन आ गया है, 40. index number 5 पे कौन आ गया है, 50. so now see, इसका रोल नंबर नेक्स्ट रोल नंबर हो गया, नेक्स्ट रोल नंबर नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया, इसका रोल नंबर नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया. दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग. सो इंडेक्स नंबर 2 इज बीन possessed by 25 now. Okay, similarly if I say list 1 insert index number 0 पे insert करो 100. okay, so index number 0 पे अब कौन आ गया है, 100. okay, तो अब 0 पे जो था 10 था वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो रहा है, सो 10 हो गया है 1. ओके, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 and this is 6. okay, this is how insert. Now similarly count. Okay, returns the number of times a given element appears in the list. How many times is that particular element appearing in the entire list that is given by it. Say suppose this is 10, 20, 30, 10, 40, 10. Okay, I say list 1 count 10. तो वो काउंट करेगा कि ये जो आइटम नंबर 10 है, ओके, आइटम नंबर और द डेटा, डेटा 10 इज अकरिंग हाउ मेनी टाइम्स, नंबर 1, फिर दूसरी बार अकर हो रहा है यहाँ पे और फिर तीसरी बार अकर हो रहा है यहाँ पे. Okay, so 3 times it is occurring, so it is giving me the output 3. If I say list 1 dot count 90, 90 number है कहीं पे नहीं, it is going to traverse the entire list and it is going to give me the output as 0 because 90 is not occurring there. Okay, now find. अब count समझ में आ गया, अब count और find के बीच में difference देखो. Okay, what is find? It returns the index of the first occurrence of the element in the list. फर्स्ट टाइम कब अकर हुआ है. ओके, दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू टेल यू. मतलब वो एलिमेंट जो है वो काफी बार अकर कर रहा है, इट इज अकरिंग अ लॉट मेनी टाइम्स इन द लिस्ट, बट first time when did it occur, first time when are you able to see it. Okay, that is going to be told by find. Okay, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 20, 10, 40, 10. Okay, if I say list 1 dot index, okay, 20. Okay, so
it is going to tell me when did for the first time this 20 occur. Okay, this is index value 0, this is index value 1, so it is going to give you the index number. It is going to tell you that 1, it is occurring for the first time in the index value 1. Okay, similarly list 1 dot index 90, तो वो बताएगा पूरा ट्रैवल्स करके बता देगा no 90 is not in the list, there is a value error, you have given me a wrong value, this does not occur at all in the list. Okay, so tomorrow we are going to see with remove and pop. The reason why I'm not going to do remove and pop, because you need to understand the difference between these two. Okay, remove and pop difference is important, just like find count difference is important, and append and insert, append and extend is important. Okay, so you understood the difference between append and extend, the difference between count and find, and tomorrow we are going to do with the difference between remove and